Friends, नमस्कार दोस्तों, very warm welcome to forex and commodity market discussion with SD। मैं हूं SD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। याद रखिएगा कि this video is not a trade recommendation, this is about what I'm thinking, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा वीडियो लॉग। और याद रखिएगा रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1, किसी का सुन के ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दैट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग द मनी। सबसे जल्दी पैसा लुटाने का वन ऑफ द वे इज किसी दूसरे का सुन के ट्रेड करना, बिकॉज जब ट्रेड का एग्जिट होगा आई मे नॉट ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू टू द एग्जिट। सो बेसिकली मैं बिलीव करता हूं कि ये जो डिस्कशन हो रहा है करेंसी कमोडिटी मार्केट का, इससे मेरा जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प होने वाला है। अलॉन्ग विद जो लोग मेरे सेटअप को इस्तेमाल करते हैं उनको भी हेल्प होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। फर्स्ट विल टेक अ लुक एट कि इकोनॉमिक कैलेंडर इस सप्ताह कौन सा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टुडे, दैट इज द ट्रम्प इनॉग्रेशन डे, और 21 जनवरी ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प आफ्टर बीइंग इलेक्टेड कौन सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट अ लॉट। Friday is another important event, that is Bank of Japan, that is the Japan ka central bank will increase the expected ki will increase the interest rates by 25 basis points. Now Japan has been holding interest rates at close to zero for almost more than a decade. So this is significantly important for Japanese currency traders. So agar सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक करने में फेल हुआ और डिड नॉट हाइक, जापानीज येन में शार्प सेल ऑफ आ सकता है, whereas Japanese bonds can rally, short term bonds obviously. Now let's look at what are the positions I'm thinking about. First I'll start with the base metal. In the base metal pack I am bullish on aluminium. So base metal देखने के लिए I'll use the commodity setup, or let me first get to the करेंसी। पहले करेंसी को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे बेस मेटल्स को। करेंसी में डॉलर इंडेक्स में आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ माय डॉलर एक्सपोजर दैट वाज डन वाया ईटीएफ। क्यों मैंने एक्सपोजर क्लोज कर दिया? बिकॉज ओवरऑल आई सॉ अ डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। जैसे इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन हुआ, आई एग्जिटेड माय शॉर्ट bonds or long interest rate position. Also along with that I exited the US dollar. सो यूएस डॉलर में अभी एग्जिट कर लिए, यूरो में एग्जिट कर लिए। सो ओवरऑल करेंसी मार्केट पोजीशन इज आई एम होल्डिंग मोर ऑफ अ न्यूट्रल। आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंस बैक, बट अभी भी अगर लंबा टाइम फ्रेम देखा जाए, डॉलर इज नॉट येट टर्न्ड बियरिश एंड यूरो यूएसडी अभी तक बुलिश टर्न नहीं हुआ है। सो आई विल नॉट से कि डॉलर बियरिश हो गया ओवरऑल, बट डेफिनेटली एग्जिट का मौका तो जरूर आया है इन द डॉलर। Now, as dollar, if it moves lower, it will add some bullish pressure. If it dollar moves lower, it will have bullish pressure on commodities. Now, let's look at the commodities. Commodities, I'm bullish on aluminium. It has given a beautiful daily break, weekly break, 125 minutes break. Superb aluminium. I still remain somewhat bullish. और थोड़ा longer term chart अगर देखेंगे, so aluminium has a strong possibility कि it will rise up to 288 price तक ये पहुंच सकता है from 256. That will be quite a rise of another 10 around percent. Whereas copper can turn bullish, but अभी तक वो उतना bullish है नहीं। थोड़ा daily chart में copper को अगर देखेंगे, copper has given a correction, ये रहा red cap। तो करेक्शन जो आ रहा है इंपॉर्टेंट लेवल से आ रहा है। इट वाज एक्सपेक्टेड, एंटीसिपेटेड कि ये जो फ्लैट लाइन है इट एक्ट एज रेजिस्टेंस, तो उसने रेजिस्टेंस का काम किया। नाउ इफ कॉपर कैन ब्रेक फ्रॉम एनी स्लैंटिंग जोन, जिसका ऐसे स्लैंटिंग है जो लाइन, अगर वहां से ब्रेक हुआ देन कॉपर इज वेरी लाइकली विल क्लियर अप दिस रेजिस्टेंस 843 and will move to test the next resistance, that is around 865 to 67। थोड़ा साउंड आ रहा होगा, बाहर मेरा घर में काम हो रहा है, तो आई थिंक यू विल थोड़ा इग्नोर कीजिएगा अगर साउंड आ रहा है तो 865 867 यहां तक डेफिनेटली पहुंच सकता है कॉपर, इफ इट कैन ब्रेक फ्रॉम द स्लैंटिंग जोन।
करंटली जब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता, आई एम मोर ऑफ अ न्यूट्रल इन कॉपर विद एडमिटिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट विल गो अप। जिंक लास्ट ब्रेकडाउन, नीचे की तरफ जो ब्रेकडाउन था इंपॉर्टेंट लेवल का, वो फेलियर हुआ। ये जो ब्रेकडाउन मैंने हाईलाइट किया था अपने पोस्ट पे, बट वो फेल हुआ एंड नाउ इट हैज टर्निंग बुलिश। और बुलिश हुआ तो भी कोई फायदा उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 282 83 के पास, सो जिंक कैन रिमेन मोर ऑफ अ रेंज बाउंड। नेक्स्ट चले आते हैं, चलिए गोल्ड सिल्वर पे। गोल्ड आई रिमेन बुलिश, एक माइनर करेक्शन दिख रहा है गोल्ड में, बट उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड कैन गो फर्दर बुलिश। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है 2663 पे, ये डॉलर 2663 पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है गोल्ड का मेन बेस। गोल्ड हैज अ पॉसिबिलिटी कि ये फर्दर राइज हो सकता है। सिल्वर ऑन द अदर हैंड आई एम नॉट दैट बुलिश। सिल्वर ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट राइट नाउ आई एम प्रेफरिंग गोल्ड मोर देन सिल्वर। आप देख सकते हैं गोल्ड इन द डेली चार्ट, उसका strength status is more neutral where silver is falling. So gold, silver is giving a red cap, so I'll avoid silver for the time being, whereas even if gold red cap is there, I'll hold the trade and I'll look to add more position when again once again candle फिर से जब bullish turn हो जाएगा। अभी एक correction चल रहा है, so once it turns bullish, कैसे bullish का अलर्ट डालेंगे, price action bullish, और वो अलर्ट के साथ हम लोग गोल्ड में वापस आ जाएंगे। Now we'll go to the natural gas. Natural gas has given big drop. I have exited the trade. However, I don't think natural gas has turned bearish, और मुझे कोई bearish trade लेने का plan भी नहीं है। Natural gas I was holding via ETF, and in future also I plan to hold via ETF now. I'm fundamentally bullish on natural gas. So fundamentally bullishness in natural gas cannot be right now played with derivatives. It is right now best played with ETF, which I did and exited because there was a strong correction coming up. ये level expected था कि correction होने का possibility था इस level से। ये देखिए, अगर flat lines अगर आप draw करेंगे, so there was a possibility कि natural gas will take resistance from this level and it failed to break higher. But in future, going ahead into 2025, I think natural gas has a lot of scope to rise. There is fundamental reason for natural gas to rise. I think Europe will likely to suffer thoda shortage of natural gas, and that can be bullish. Let's come down to US crude oil. Crude oil has come up recently. It is going through a correction. It is, as you can see, it is going through a major correction, the crude oil. Now, I don't think crude oil has turned bearish. It can remain range bound for some time being. Once the $80 is crossed significantly, crude can then try to test the $90 level. So currently, I remain more neutral and I'll wait for the market to give clear correction. शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश एंड उसके साथ रेड कैप, तो इसमें एग्जिट तो क्रूड ऑयल में आ चुका है। Now this is what we looked at: base metal, gold, silver and energy pack. I am also bullish on some of the grains like corn. I am bullish on, and this I am bullish via ETF. I can see the big players are buying the corn, so along with that I remain bullish on corn, and I have taken a bullish bet. Started, this is just a beginning. Once again, मेरा सुन के मत ट्रेड कीजिएगा. I have started taking bullish bets. First round of bullish bets, not very bullish. I'm more bullish on corn than I'm in soybean. But I've started taking initial bull exposure towards soybean. Grain complex can do better. Looks like in 2025. ग्रेन में है कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन, विच आर वेरी गुड एंड ट्रेडेबल. व्हीट में अभी तक कोई रिकवरी नहीं आया. व्हीट इज स्टिल गोइंग डाउन, whereas corn and soybean showing signs of recovery and bounce back. So overall ये रहे मेरे commodity का प्लेबुक.
I hope this video discussion was helpful to you. अगर help हुआ है, don't forget to give a thumbs up. All the best from my side. As always, happy trading.